हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते होंगे रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने सीनियर पीए और पीए की वैकेंसीज निकाली थी और टोटल 127 वैकेंसीज थी, जिसमें थी 60 एसपीए की और 67 जो थी वो थी पीए की। और इनकी 6 मार्च से लेकर 31 मार्च तक अप्लाई करने की डेट थी और आज ही लास्ट डेट थी उसकी। मुझे उम्मीद है कि जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया होगा। और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि उसमें स्टेज 1 पर टाइपिंग टेस्ट होना 10 मिनट का, जिसमें उनको 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए। और स्टेज 2 जो भी स्टेज 1 क्लियर करेंगे उसको स्टेज 2 में एंटर करेंगे वो, और उसके लिए उनको स्टेनो का टेस्ट देना होगा, जिसमें पीए के लिए 100 वर्ड्स पर मिनट होगा स्पीड और एसपीए के लिए 110 वर्ड्स पर मिनट होगी। दोनों ही पोस्ट के लिए डिक्टेशन 5 मिनट की होगी, जिसमें 500 और 550 वर्ड आएंगे, और इनको ट्रांसक्राइब करने के लिए 45 मिनट मिलेंगे और रीडिंग के लिए टाइम अलग से नहीं मिलेगा। जहाँ तक डिक्टेशन के मैटर का संबंध है, इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है और ना ही कहीं सिलेबस दिया जाता है कि किस तरह का मैटर आएगा। बट जो ज़्यादा चांसेस हैं वो हैं लीगल पैसेज के, और इसीलिए मैं इस वीडियो के साथ आपको एक डिक्टेशन दे रहा हूँ जो कि डिफरेंट स्पीड पर है और अलग अलग स्पीड पर है। जो भी जिस स्पीड पर लिख रहा है, जो भी जिसकी सिचुएशन है, उस हिसाब से वो बिगिनिंग की स्पीड उसमें से ले सकता है, उसके बाद वो हायर स्पीड पर उसको पैसेज को लिख सकता है। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर चुके हैं उनको सबसे पहले फोकस करना चाहिए एक्यूरेट टाइपिंग पर, जो उनकी ट्रांसक्रिप्शन करने में भी हेल्प करेगी और उनको स्टेज 2 पर ले जाने में हेल्प करेगी। और साथ के साथ ही उनको इसके स्किल टेस्ट के लिए भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि चांसेस ये हो सकते हैं कि आपको बीच में गैप बहुत कम मिले। हो सकता है सेम डेट में हो, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर अलग भी हुआ तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ज़्यादा गैप नहीं मिलेगा। इसलिए स्टेनोग्राफी की तैयारी करना अभी से बहुत ज़रूरी है। और नेचुरली दिल्ली हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है तो प्रोसेस भी उनकी स्लो नहीं होगी। एक रीज़नेबल टाइम देकर वो आपको नेक्स्ट टेस्ट जो है बुलाएंगे। आप लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि लीगल पैसेजेस भी करिए और जनरल पैसेजेस भी करिए। मेरे चैनल से, किसी भी चैनल से कर सकते हैं आप। जनरल पैसेजेस भी बहुत हैं डिफरेंट मैगजीन से, और लीगल पैसेजेस पहले भी हैं और ये मैं और भी दे रहा हूँ। इसमें आउटलाइंस जो हैं दी तो हुई हैं, लेकिन आप जिस भी आउटलाइन को अडॉप्ट करना चाहें आपके अपने ऊपर है। जो आपको कन्वीनियंट हो, जो आपको एक्यूरेसी की तरफ ले जाए, उसी को करिए। नई तब करिए अगर आपको समझ आ सके, आप उसको प्रॉपरली अडॉप्ट करके यूज़ कर सके। मेरी अगर माने तो डेली डिक्टेशन करिए, कोई सी भी करें, लेकिन उसको आप ट्रांसक्राइब ज़रूर करें, और वो भी कंप्यूटर पे ट्रांसक्राइब करें। और प्रेफरेबली आप उसका प्रिंट लें और ख़ुद चेक करें, ताकि आपको मिस्टेक्स रियलाइज़ हों। कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम है, इसमें फोकस एक्यूरेसी पर होता है। आपने देखा है उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। एक एक मिस्टेक जो है अगर हम करते हैं तो हमें पीछे की ओर ले जाती है। तो आपको केयरफुली करना है, नंबर पर नहीं जाना कि मैंने ज़्यादा करने हैं पैसेजेस, वो आपको हेल्प नहीं करेंगे। आप जितना सॉलिड और जितना डिटेल्ड में किसी चीज़ को कर पाएँ वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जहाँ आप समझें कि आपको मीनिंग देखना है तो मीनिंग ज़रूर देखिए, क्योंकि जब हम मीनिंग देखते हैं तो वर्ड हमारे लिए आसान हो जाता है, और उसको टेक्स्ट से जब रिलेट करते हैं तो और भी आसान हो जाता है। तो ये करने से आप अपने आप को डेवलप करते हैं और अपने आप को और कॉम्पिटेंसी में बढ़ाते हैं। तो अब मैं डिक्टेशन शुरू करता हूँ। प्लीज़ गेट रेडी फॉर डिक्टेशन ऑफ ए लीगल पैसेज। 5 seconds. Start. The view taken by the High Court, namely that even if there was an assurance given by the fourth respondent on behalf of the state government, and such assurance was binding on the state government on the principle of promissory estoppel,
the appellant had waived its right under it by accepting the concessional rates of sales tax set out in the letter of the fifth respondent dated 20th January 2020 is not correct. Waiver is a question of fact and it must be properly pleaded and proved. No plea of waiver can be allowed to be raised unless it is pleaded and the factual foundation for it is laid in the pleadings. In the instant case, the plea of waiver was not taken by the state government in the affidavit filed on its behalf in reply to the writ petition, nor was it indicated even vaguely in such affidavit. It was raised for the first time at the hearing of the writ petition. That was clearly impermissible without an amendment of the affidavit in reply or a supplementary affidavit raising such plea. It was not right for the High Court to have allowed the plea of waiver to be raised against the appellant, and that plea should have been rejected in limine. If waiver were properly pleaded in the affidavit, in reply, the appellant would have had an opportunity of placing on record facts showing why and in what circumstances the appellant came to address the letter dated 25th June 2020 and establishing that on those facts there was no waiver by the appellant of its right to exemption under the assurance given by the fourth respondent. But in the absence of such pleading in the affidavit in reply, this opportunity was denied to the appellant. Waiver means abandonment of a right, and it may be either express or implied from conduct, but its basic requirement is that it must be an intentional act with knowledge. There can be no waiver unless the person who is said to have waived is fully informed as to his right, and with full knowledge of such right, he intentionally abandons it. In the instant case, on the facts, the plea of waiver could not be said to have been made out by the state government. There was nothing to state that at the date when the appellant addressed the letter dated 25th June 2020, it had full knowledge of its right to exemption under the assurance given by the fourth respondent and that it intentionally abandoned such right. It is not possible to presume in the absence of any material placed before the court that the appellant had full knowledge of its right to exemption so as to warrant an inference that the appellant waived such right by addressing the letter dated 25th June 2020. It is difficult to speculate what was the reason why the appellant addressed the letter 25th June 2020 stating that it would avail of the concessional rates of sales tax granted under the letter dated 20th January 2020. Stop.